गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड चैलेंजेस। सो गाइस, आज का चैलेंज होने वाला है एक और बर्प चैलेंज विद 2 लीटर कोक। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज के चैलेंज के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये 2 लीटर कोक। सो देयर इज़ नो लिमिट टू फिनिश एनी क्वांटिटी एंड इट्स प्योरली अ बर्प वीडियो। सो ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बर्प्स कंट्रोल करके रखनी है या कुछ भी। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने बर्प चैलेंज करते करते एक चीज़ नोटिस की है कि अगर इसको पूरी बॉटल फिनिश हो जाती है, बट अगर धीरे धीरे करके पियो, अगर आप कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। सो मैं इसको धीरे धीरे करके पीने वाली हूँ। सो देखते हैं कि मैं फिनिश भी कर पाती हूँ या फिर नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता। सो टुडे माई स्टमक इज़ लिटिल एम्प्टी, क्योंकि मैंने खा के किया हुआ है, बहुत ही बुरी हालत होती है। सो आज मैंने कुछ कम खाया है, ज़्यादा नहीं खाया हुआ। सो देखते हैं कि कैसा जाता है।
माई स्टमक इज़ अबाउट टू फुल एंड यहाँ पे हाफ से भी ज़्यादा बॉटल बची हुई है. मैं नहीं चाहती ओवरफ्लो हो, अदरवाइज़ वो प्यूक आ जाती है. ओके. Oof. No better.
स्टमक फुल नहीं भी है एक्चुअली. बर्ब्स आ जाए तो थोड़ा सा स्टमक एम्प्टी हो. बर्ब्स नहीं आ रही. इतनी रह गई है. आई कैन ड्रिंक द होल बॉटल बट मुझे डर है कि प्यूक ना हो जाए. तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ. सो इतनी बॉटल रह गई है. I'm done. So guys, that's it for today's video. If you like my these kind of challenges, please make sure to hit the like button and मिलती हूँ मैं आपसे अपनी next video में. Till then, stay tuned.